What is the Chinese name of large intestine meridian? And Yang. Total number of points are 20. Bilaterally, it becomes 40. Okay, 20 points, 40. Okay. Now let us understand the external and internal part of the large intestine meridian. Starts at the lateral nerve of index finger just one, don't go. Index finger on radial side. Okay, ये रेडियल साइड क्योंकि ये रेडियल बोन यहाँ पे रेडियस. Okay, that's the first point. Li1. Then it moves up. It moves up through the first and the second metacarpal bone. Then it enters the depression, the anatomical snub box. This is called as anatomical snub box between the tendons of extensor pollicis and longus and external pollicis brevis. Okay, ये दो यहाँ पे टेंडन्स है, ये यहाँ पे anatomical snub box के. ये देखिए यहाँ पे लगता है, समझ में आता है. Okay, so it is between the tendons of extensor pollicis longus and extensor pollicis brevis. Following the lateral border at the lateral aspect, it enters the elbow. From there, it takes the lateral side and goes to the acromion. Here is large intestine 15. This is large intestine 15. How to locate large intestine 15? When your hand is abducted मतलब ऐसा होगा. यहाँ पर जो dimple होगा, in this dimple there is large intestine 15. If you abduct your hand like this and if you don't find the dimple, that means you are obese. Okay, so you must find. और अगर नहीं है तो उसको बनाने की कोशिश करो मतलब reduce your weight. If you don't find that dimple, there is one dimple in front of the acromion and one dimple behind this clavicular bone. Behind is triple 114, but we are not dealing with triple 114 right now, so that is why I'll talk about the large intestine meridian. So it is large intestine 15 is here at the acromion in the dimple which is formed when you abduct your hand, and then from there it goes to Li16. It goes to Li16, and from Li16
it connects to DU14 point, which is on the DU meridian. And from there, it comes to the supraclavicular fossa. From supraclavicular fossa, it enters into the lung, which is the couple organ, and then through the diaphragm, it goes down and gets connected to its own organ, that is the large intestine. Okay. One another branch which starts from the supraclavicular fossa, which goes through the cheek, it encircles the lower gums, the teeth of the lower gums, and then it encircles the mouth, and then it ends at the Ella nasi at the corner of the nose, where it meets the stomach meridian of hand, foot, yang ming. Okay. And what is the large intestine meridian? Hand yang ming. So it meets the foot yang ming meridian at the Ella nasi. Okay. This is the total path of the meridian. Okay, the internal and the external. And as you know, all the external part, the meridians which are there on the external part of the body are having points, and those points, when we needle, we work on different ailments and problems. To sort out those problems, we needle. We never needle the internal part. We can't, because there is no, you can't see the internal part. You only see the external part, and this is how the external part of the large intestine meridian is. You want this? Okay. Rajiv? Yes. Yeah. So, shall I move ahead now? Yes. Slowly going deeper into the subject. Yes. Large intestine, there are 20 points on each side. So, both sides, it will be 40 points. And what are the indications of the, before that, I will give you some information about the large intestine meridian. The related connective tissue is skin and body hair. The connected organ is nose. Time of this meridian is 5 a.m. to 7 a.m. The movement of this meridian is stomach 25. The back shoe is urinary bladder 25. The Z cleft of this, Z cleft means the maximum accumulation of the energy of this meridian is at Li 7 point. The yawn source point is Li 4. Yawn source means what is the yawn source point? Maximum energy, Z cleft mother. This is analgesic point, Ravi? No. Yeah, it is an analgesic point, but I'm asking about the it the balances. It balances all the. What is yawn source? Directly connected with The point is directly connected to the organ, and it communicates to the organ, and the organ communicates to the meridian with this point. It is also called as the energy. Sir, is it Li4, sir? Sir, this is Shanmuka, sir. Yes, yeah. Sir, is it the Muonson spot is Li4? Yes, Hagu. Yes. It is right. Thank you, sir. Yeah. Okay. So the lower connecting point is Li6. The jingle point is Li1. What is jingle point? Why jingle points are used? What for? They are used for emergencies. They are also used in chronic diseases. If you only needle jingle points on all 10 fingers and toes, you will get very good result. You can treat people very well. But jingle points are generally more painful because there are less muscles. Okay.
Ravi, But jingual points are having maximum energy, right? yeah, And normally we use them for reviving consciousness, right? You had mentioned. yeah, yeah. Yeah, And in even emergency, for heart attacks or strokes, I think they are very helpful. yeah. H9, for example, Ravi, Yes, you had mentioned. yes, exactly. H9 is it is a big savior for if somebody has an heart attack. Yeah, Just pierce that H9 point and you can take that person to the hospital. right. लेकिन H9 में ब्लीड वो करने के बाद ब्लीडिंग करने के बाद वो क्या बोलता है, नहीं अब मैं ठीक हूँ, गलती नहीं करना, Admit करना. बिल्कुल जाके उसको उसका बाईपास होना ही चाहिए ना, क्योंकि वो हमने टेम्पररी वो दिया है, लेकिन वो हम उसको वो नहीं कर सकते। ये मेरे पापा के साथ हुआ है। नहीं अब तो मैं ठीक हो गया, नहीं मैं उनको बोलता था नहीं आप करा लो, लेकिन बाद में ऐसा उनका वो स्टेज आया कि डॉक्टर ने बोला कि इनका इजेक्शन फैक्टर नहीं बराबर है, तो हम इनका ना बाईपास नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन फर्स्ट टाइम ही जब उनको हुआ था हार्ट का प्रॉब्लम, तभी मैंने उनको कहा था बाईपास करा लो, पर बोले नहीं अब तो मुझे अच्छा इमरजेंसी, दैट इज एन इमरजेंसी H9। रवि, बाबा को भी तो कितना फर्क पड़ा था, आपने ब्लीड किया था करके, सुधीर बाबा। किसको? मोहिते बाबा। हाँ। उनको हार्ट अटैक आया तो 10 मिनट तक आ भी नहीं सके थे हमारे तक, रिमेम्बर? हाँ, हमारे पड़ोसी थे, वो आ नहीं सकते थे, और मेरे ख्याल से उनका बाद में ब्लीडिंग किया था क्या? हाँ ना, हाँ, याद है। हम तो बाद में ब्लीडिंग किया, उसके बाद आप लोग हॉस्पिटल लेके गए थे। हाँ एंड ही वाज मच रिलीव्ड। यस या उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट, नहीं तो पेशेंट का ना बहुत ज्यादा वॉकिंग फास्टर आफ्टर द ब्लीडिंग। या so there was a neighbor who had this kind of, he was unable to even move, but somehow he called he called you, Deval, right? He came up to us. No, he came up to our door, rang the bell, but he couldn't speak. फिर आपने बिठाया उसको, ब्लीडिंग किया। Okay. और if उसके बाद he was able to walk around properly, he came with you all in the car. Yeah. He had to be carried on a stretcher to the hospital. Yeah. So And the doctor also said that he was doing despite the fact that his age was advanced and he's had a heart attack, his not showing, yes, he was doing pretty well. Recovery was amazing. Yeah. Emergency points works very well. Even in facial, if somebody has paralysis, immediately needle all the jingle points, all जितने jingle points है सारे bleed कर दो। किसी को ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक आया है अगर, और 4 दिन के बाद ब्लीडिंग किया, तो फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, तब तक तो डैमेज काफी हो जाता है, लेकिन किया तो भी उसका फायदा होगा जरूर। ओके। हाँ, पापा को हुआ था, लेकिन 3 दिन तक डॉक्टर ही नहीं मिला। ओके। कल डॉक्टर के पास जाके आए, तो ही सेड अभी तो सब नॉर्मल लग रहा है, बट ही समटाइम्स नॉट एबल टू मूव हिज लेफ्ट लेग। ओके। नहीं, अभी ब्लीडिंग विल हेल्प हिम और ऑन। इमीडिएटली अगर किसी को फेशियल पैरालिसिस हुआ, बेल्स पाल्सी हुआ है, अगर किसी को पैरालिसिस हुआ है, जो कुछ भी हेमीप्लेजिया हो, क्वाड्रिप्लेजिया हो, कुछ भी हो, आप फटाफट सारे जिंगुअल पॉइंट्स को ब्लीड करेंगे फटाफट, कितना भी ज्यादा दुख रहा होगा तो भी करने का। तो उसका जो स्ट्रोक है ना, वो एडवांस स्टेज में जाने के लिए ना वो नहीं जाता फिर, ठीक है ना? ओके, सो Yonso's point is Li4, Jingwell point is Li1, the mother point is Li11। ये मैं आपको जब 5 एलिमेंट सिखाऊंगा तब मैं इसको बहुत डिटेल में इसको करने वाला हूं, क्योंकि ये जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, इसके बेसिस के ऊपर हमारा पूरा ट्रीटमेंट एक्यूपंक्चर का अगर आप करेंगे, टंग डायग्नोसिस करके, पल्स डायग्नोसिस करेंगे, आई डायग्नोसिस करेंगे, ईयर डायग्नोसिस करेंगे, और इसके बेस के ऊपर अगर आप अपना 5 एलिमेंट का जो ट्रीटमेंट है
if you will formulate a prescription on basis of 5 elements, the patient will recover faster and better results are obtained by using 5 element theory. Okay. So the first point of Li meridian is Shangyuan, and the last point is Yingxian. That is Li20, Li1 to Li20. Now we are going to select, as in our studies, we are going to select routinely used points. We are not going to take all the points, but all other points will be discussed during the 0 hour, that is on Saturday. Whatever problems you will have, we will discuss it on that day about those points which are not covered here. Okay. Then another thing is I am going to have special sessions on yawn source points and its indications. Then Ziegler points and its indications. So we are going to cover around 150 points in our studies, and all other 400 points we will study in separate sessions like 0 hours or %. But they are not important. These points which I'll be covering here, they are routinely used points and they are used all the time by all acupuncturists. Okay. So here 8 points are selected and introduced. So I am going to select only 8 points and we will learn about those points. Shangyuan is Li1 on the radial side of the index finger. That is here. ये radial side है, ये radial bone है, ये वाला corner. ये वाला corner में large intestine 1 point है. Okay, कहाँ पे है वो 1.5 chun, 0.1 chun posterior to the corner of the nail. 0.1 chun. Okay. वो कैसे करने का, जब हम एक्चुअल नीडलिंग के तरफ जाएंगे तो उसको कैसे नीडल करते या ब्लीड करते वो हम लोग बाद में सीखेंगे. Okay, it is a jingle point of the meridian. सारे जो फिंगर के टिप पे है, कॉर्नर ऑफ द नेल पे, वो सारे जिंगल पॉइंट्स होते हैं. तो ये जिंगल पॉइंट है, इमरजेंसी के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं. और इट इज ऑल्सो द हॉररी पॉइंट ऑफ द मरीडियन. ये हॉररी पॉइंट भी है. ओके, सो हॉररी पॉइंट क्या है ये हम बहुत डिटेल में बाद में सीखने वाले हैं. लेकिन अभी हम ये यहाँ हॉररी पॉइंट का मतलब होता है वो इमरजेंसी वाला पॉइंट होता है जो एलिमेंट मेरिडियन का होता है, वो पॉइंट का सेम एलिमेंट जो होता है वो हॉररी पॉइंट होता है. ठीक है. सो व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ दिस पॉइंट इज स्ट्रोक, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, टूथेक क्यों? क्योंकि a branch from the supraclavicle fossa, it enters into the lower teeth, but it encircles the upper lip as well. Okay. ठीक है. Ravi, stroke is heart stroke, right? Stroke is also a heart stroke, and the paralysis के stroke को mostly wind stroke कहते हैं. So write down wind stroke. Okay. Okay, wind stroke. विंड स्ट्रोक का मतलब होता है पैरालिसिस, अटैक ऑफ पैरालिसिस. हिंदी में हिंदी में मराठी में उसको कहते हैं अर्धांग वायु, wind stroke. So it has something to do with wind. Okay. Now here let me give you one information. You have elderly people in the house or even young people. Never after taking bath, never get into under the fan. कभी नहीं, बाहर जाना नहीं. अगर बाल गीले हैं, हेड गीला है, बॉडी गीली है, तो एकदम से लोग क्या करते हैं, वो पंखे के नीचे ऐसे ऐसे हीरोगिरी करते हैं, है ना. वो नहीं करना. आपके एल्डर्स को, all the elders in your house, they should get themselves dried up, and then only they get in touch with the air outside or under the fan.
एयर कंडीशन वगैरह बाद में बिल्कुल एकदम वर्जित करना है, नहीं जाना है। सबसे बड़ा जो है वो विंड स्ट्रोक जो है वो हवा से आता है, पंखे की हवा से। जब नहाने के बाद जब इंसान पंखों के नीचे बाहर की हवा में चला जाता है तो उसको विंड स्ट्रोक होने के चांसेस। विंड स्ट्रोक का मतलब होता है अर्धांग वायु, मतलब पैरालिसिस। ओके, तो वो अवॉइड करने का है, तो कभी हवा में नहीं जाना नहाने के बाद। सो नमनेस ऑफ द फिंगर्स, ठीक है, ऑल फिंगर्स, अगर ये वाला नमनेस अगर है तो ये वाले पॉइंट को हम ब्लीड करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है ना, LI1 है, जिंगवेल पॉइंट है, इसको ब्लीड करते हैं। या फिर यहाँ पर वी कैन ऑल्सो पुट 1 हाफ चून निडल इन इट, 0.1 चून इंसर्शन है, एंड देन यू कैन गेट वेरी गुड रिजल्ट ऑफ इट। स्वेलिंग ऑफ चीक, स्वेलिंग ऑफ चीक क्यों? क्योंकि दोनों मेरिडियन जो है फ्रॉम द सुपरक्लेविकल फोसा द ब्रांच एंटर्स इनटू द चीक फर्स्ट एंड देन इट गोज अराउंड द teeth of the lower gum and then encircles the upper lip and ends on the corner of the alanus. Okay, yeah. So febrile diseases, febrile diseases का मतलब होता है बुखार की वजह से होने वाले प्रॉब्लम, ठीक है। Then loss of consciousness, you can use this point for loss of consciousness. Difficulty in breathing, pressure in the chest, and this point is also used for epilepsy. Okay, so epilepsy के लिए ये एक पॉइंट है। आप लोगों ने रेडी रेकनर बनाना चालू किया क्या? हाँ, आप देखो अभी एपिलेप्सी का एक होगा, और भी कई सारे पॉइंट्स आएंगे एपिलेप्सी के लिए हमको, तो हम उसको एपिलेप्सी के हेड में डालेंगे, और एपिलेप्सी के अगर पेशेंट आते हैं तो हम उनके ऊपर उसको यूज करेंगे। रेडी रेगुलर का होना आपके लिए बहुत जरूरी है, इनिशियल स्टेजेस में बहुत काम करेगा। आप अगर इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं तो रेडी रेगुलर रखिए और अपने पेशेंट को रेडी रेगुलर के हिसाब से ट्रीट करिए, ठीक है। रेडी बल्ली, बिफोर यू लीव आई वांट योर रेडी रेगुलर रेडी। Okay. Function of this point is clears the heat, expels the wind and heat. Also, it expels wind cold, wind heat. Clears the heat, expels the wind heat and wind cold. All these terms we will be learning when we will learn how to diagnose. Diagnosis जब सीखेंगे, at that time you will learn all these terms, because we have to see whether it is wind heat, whether it is only heat, whether it is only the pathogenic factor. These are called as pathogenic factor. What is the pathogenic factor? It is heat, it is cold, it is wind heat, it is cold heat, it is damp heat, it is damp cold. What is all that? So all the symptoms of all are different. You will be able to make out, okay, ये symptoms है, so it is damp heat, it is damp cold, it is wind heat, it is wind cold. Okay, so these are all pathogens. Okay, but when we will learn diagnosis, at that time I am going to introduce you all these things then. Okay, not now. Okay, so it opens the senses. Okay, all those senses, 5 senses, it opens up, flares up. Okay. It revives the mind. It revives the mind. Uncluttered mind अगर है किसी का, वो बोलते ना मेरे ना समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ, इसको ये वाला पॉइंट लगा दो, जिंग में थोड़ा डीप लगाना है इसको। जो कंफ्यूज लोग रहते हैं ना, हमको जरा ज्यादा ही डीप लगाना, फट से बाहर कंफ्यूजन से, है ना। हाँ, क्योंकि कंफ्यूजन जो ये है ना, कंफ्यूजन है, मेरे समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, ये ना एक्चुअली कोई रोग वोग नहीं है, ये उन्होंने करी कराई वो अपने से इनवाइट किए हुए प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके ओके, सो इट ऑल्सो ब्राइटन्स योर आईज, ब्राइटन्स योर आईज। आंखों में जो नहीं, आप बोलते अरे इसकी आंखें कैसी एकदम मरी मरी जैसे लग रही है, सो point, this point, needle this point, it will brighten your eyes. And bright eyes
are indication of person's happiness. If the person is not happy, the eyes will be dull. तो उसको ये मत बोला, अरे तू तो बड़ा दुखी है. पेशेंट को ऐसा जब देखा डल आइज है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दुखी है, तो ये वाला पॉइंट आप लगा दीजिए. ठीक है. What is the qualification of the point? It is a jingle point of the large intestine meridian. Also, it is an horary point. मतलब इसका टाइम कब होता है लार्ज इंटेस्टाइन का? 5 AM to 7 AM. 5:45 डाले सच्चे सर, 5 to 7. 5 to 7. So once I have put this point to Shanmuka sir. Shanmukh, so Shanmukh will share his story Experience. about this point. Yes, sir. So after I received that point, no, sir, I went to the washroom, sir. कितना toxins निकाला है जिंदगी में, कैसा वाला नहीं देखा कभी नहीं मैंने. Very effective, sir. That was. That day also I shared the thing with you, sir. Yeah. वो इतना टॉक्सिन बाहर निकला है जो कई सालों का, 2-4 जन्मों का भरा हुआ मतलब बाहर निकला. Thank you, sir. Okay, now what is the name of this point? Shang Yang. Shang Yang. Okay, Shang Yang. Okay, so the extra information about this point is Shang is the 5th note of in the musical scale. It is the 5th note which determines the metal element. Okay, याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है. Prick point 1 chun or prick to bleed. Use 3 to 5 moxa cones. Moxa cones यहाँ पे रखने के लिए बड़ा वाले नहीं लेने का. दूसरे पॉइंट जहां पर बड़ा एरिया होता है, ये तो इतना छोटा सा एरिया ना, इसको ना राई के दाने से भी छोटा, मतलब राई के दाने से या मूंग की दाल के बराबर का मोक्सा कोन लेके यहाँ पे रखने का. बड़ा वाला मोक्सा कोन रहेगा ना, पूरा उंगली जल जाएंगे, समझे ना. वो मूंग के दाल के बराबर का वो रख के उसको इग्नाइट करने का. ठीक है. ओके. सो दैट यांग यांग, वो चाइनीज का म्यूजिकल नोट मालूम क्या? म्यूजिकल नोट मतलब अपना ना सारे वो म्यूजिकल नोट्स है ना. तो वैसा इसका जो म्यूजिकल नोट है, 5th म्यूजिकल नोट है जो यांग यांग है. अब वो कैसे गाते हैं मेरे को मालूम नहीं मेरे को, लेकिन 5th म्यूजिकल नोट है. इसके वजह से इसका नाम जो है ना शैंग यांग रखा हुआ है. मैं अपने कोई काम का नहीं है वो, जस्ट एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. ओके. 5 to 10 minutes masturbation, or you can use 3 to 5 small cones. बहुत बड़े cones नहीं use करना. Okay. So next point is Li4. Hagu. Okay, Hagu. उसका चाइनीज नेम है हगु. HEGU. हाँ, वो हिंदी में नहीं बोलने का, नहीं तो फिर क्या भाषा आएगी. रवि, I beg to differ बोल सकते हैं, because what does Hagu mean? The great eliminator. हाँ, yes, yeah, you can. बराबर है. हाँ. Hagu. Okay. It's on the dorsum of the hand between the first and the second metacarpal bone. हाथों की जो ये जो बोन्स है ना, ये इसको मेटाकार्पल कहते हैं, और पाँव की जो बोन्स होती है उसको मेटाटार्सल कहते हैं. ठीक है. अभी धीरे धीरे इन सब चीजों से वाकिफ होना सीखो. फर्स्ट एंड मेटाकार्पल बोन, and it is exactly in the center of the second metacarpal bone. ये देखो, ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ स्टार्ट होती है, तो इसका सेंटर, या फिर ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है अपने हाथ के ऊपर, ऐसा पाम जब जोड़ते हैं, यहाँ पर जैसे जोड़ेंगे ये पॉइंट पे
LI4 है, हम लोग जनरली LI4 ऐसे दे रहे हैं. पहले हम देखते हैं हाईएस्ट पीक, ये देखो ये या फिर सेकेंड मेटाकार्पल बोन का सेंटर, ये देखो दिख रहा क्या राजीव? Yeah. Yeah, LI4 very effective point. Or if you bilateral, if somebody has facial paralysis, give them this only point bilaterally, you will be able to cure facial paralysis. Okay? Because this point देखो ना, सीधा सीधा मेरिडियन कहाँ से जा रही है? ये देखो फेशियल पैरालिसिस, मुंह टेढ़ा हो जाता है फेशियल पैरालिसिस में. देखो कितना इफेक्टिवली उसको एम्ब्रेस करती है ये वाली मेरिडियन, है ना? Beautiful embrace. So this point and this point for facial paralysis, this point becomes the distal point because it is not local point, है ना? So if you insert this point LI4 for local paralysis, facial paralysis person, this becomes the distal point for it. Distal points are more effective than the local point. समझे ना? अब local point हम यहाँ पे भी कर सकते थे, है ना? वो फिल्ट्रोन पे या फिर LI20, but distal points are more effective and in giving result than the local points. Okay. Yon source point of the meridian, indication, headache, neck pain. At the same time, you know, when I'm giving you indications, you must see, you know, why the indications are there. This will help you in giving your own prescriptions. The flow of the meridian कहाँ से जाता है. चलो ये तो बाहर की है, ठीक है. ये जो है, ये जो जा रही है यहाँ से वो अंदर से जा रही है, टीथ के अंदर जा रही है. तो आप लोगों को ये पाथवे समझने की वजह से, if you understand these pathways, you will be able to actually make your own treatments. ठीक है? Okay. So headache, neck pain. See the meridian go from the supraclavicular fossa. The meridian moves from the neck. Then it goes into the cheek. So toothache. Sore throat में काम करेगी कि नहीं मेरिडियन, है ना? ये क्या हो जाएगा हमारा LI4 के पॉइंट, डिस्टल पॉइंट हो जाएगा sore throat के लिए, है ना? Toothache, pain in the eyes, क्यों? Stomach meridian, यहाँ से it goes and also meet urinary bladder meridian in the inner canthus. Okay, because it connects to stomach meridian, and stomach meridian then ultimately connects to urinary bladder meridian, that is foot yangling. Okay. So tooth, sore throat, nasal obstruction. अभी हमने किसको दिया था? हाँ, उसको सर्दी थी. हमारी स्टाफ मेंबर है, she was suffering with, so we gave that LI20 point for nasal obstruction. ये भी LI4 भी दिया था, because LI4 becomes distal point for the nasal obstruction. Okay. Acne disorder, acne disorder of the large intestine. Anything to deal with large intestine, you can put LI4 and you will get very good result. Anhidrosis का मतलब क्या होता है? Either there is less or no sweating. It can be also used for hydrosis. Hydrosis का मतलब होता है too much of sweating. So this point we used to put to your husband. Okay? Yeah. So too much of sweating. Dysmenorrhea का मतलब होता है, हमने वो लास्ट टाइम पढ़ा था, difficulty in menses. Okay. Dysmenorrhea.
Then it is also useful point in hemiplegia. Hemiplegia means one side of paralysis. and then constipation. See, the beauty of acupuncture is you can give same point for constipation, you can give same point for diarrhea. Generally, stomach 25 point is given for diarrhea and constipation, both. Okay. Hypo and hyperthyroid treatment is same. Hypo and hyperthyroid treatments are same. Okay. So ऐसा नहीं है कि एक पेन किलर ले लो और बाद में फिर कॉन्स्टिपेशन का ले लो, फिर बाद में वो डायरिया का ले लो, ऐसा नहीं. एक ही में सब कुछ होता है जन्म गुट. कॉमन कोल्ड, क्योंकि नाक के पास जा रही है मेरिडियन, तो हम ये मेरिडियन से डिस्टल पॉइंट हो जाता है LI4. सो यू कैन ट्रीट कॉमन कोल्ड, कॉफ, हिस्टीरिया. ओके. हिस्टीरिया इज पागलपन ना जेवण. हर्षवायू. हर्षवायू म्हणतात त्याला. Sorry, Harsha. वायू. I did not understand. Harshavayu means people just without any reason go on laughing. Laughing, screaming, anything can. Yeah. So if there is hysteria, you can treat with LI4. You can also use LI11 because it's a Jingwell point. Then you can treat with pericardium 4, triple warmer 1, SI1, pericardium 9, sorry, pericardium 9. Okay. Immediate, if somebody comes to you, you know, बैठता नहीं एक जगह पे, not sitting at one place, screaming, shouting, bleed Jingwell points. All Jingwell points you bleed. Okay. Immediately the person will calm down. Why he screams? Because there is a lot of excess heat in the body, and that is why he is screaming. Okay. Hysteria mein you can use LI4, and you can also use all Jingwell point. All toes ke, हाथ के सब पूरा Jingwell point bleed कर रहा है. This is also used in obesity, drug and tobacco addiction, thyroid disorder. Thyroid disorder देखो टॉन्सिलाइटिस में काम करेगा कि नहीं? ये करेगा. ये यहाँ पे नहीं है दिया हुआ, लेकिन टॉन्सिलाइटिस में काम करेगा. This meridian, can you work on this meridian to treat tonsillitis? Yes, क्योंकि tonsils का pathway से उधर से जा रहा है. So all meridians will treat problems of, if it is going through that organ through the internal path or the external path, whatever, they will treat that particular organ or the body part. Okay. Yeah. रवि, हा बहुगुणी पॉइंट है ना? How? बहुगुणी पॉइंट है. What is Bahuguni? Having lot of good virtues. अच्छा, बहुत सारे Multiple benefit. Get multiple benefits from this point. Okay. So many elements. Yeah. LI4 is very beautiful. I love this point. और सबसे बड़ी बात तो हमारे बॉडी का दर्द निकालता है पूरा. कहीं पे भी दर्द हो, सर में दर्द हो, पाँव में दर्द हो, कमर में दर्द हो. मुझे याद है एक आदिवासी आती थी हमारे घर में. मैं जब बहुत छोटा था, मैं बड़ा फैसिनेटेड होता था उससे. वो जब आई है, उसका इंडिकेशन क्या होता था? बोलती थी, वो ऐसा बोलती थी, खांसी की दवा, वाता की दवा, कंबर की दवा, ऐसा करके वो आती थी. तो मैं एकदम बाहर आके उसका सुनने के लिए बड़ा बेचैन हो जाता था. एकदम उसको बुलाता भी था, आओ, फिर उसको बताता था क्या प्रॉब्लम है, उससे दवाइयाँ भी लेता था. आज मेरे को ऐसा लगता है मैं भी उधर ही खड़ा हूँ. खांसी की दवा, वाताची दवा, कंबर की दवा, खांद्याची दवा, कोणता पण दर्द असेल ते काढून टाकायची दवा, ऐसा हे बोलती थी.
हाँ? अब मालूम नहीं मेरे को, अब मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं होती ना, मैं तो सुनने के लिए जाता था उसके बाद। मैं तो यंग था ना, मैं बच्चा था। सर सिर्फ हाँ सिर्फ आप भी नहीं सर, फौज भी बना रहे हैं ऐसा वाला। हाँ सिर्फ आप भी नहीं, फौज एक आर्मी भी बना रहे हैं आप अभी। हाँ, वही वही वही। अब इनको भेजेंगे, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, डायबिटीज ठीक कर लीजिए, थायराइड ठीक कर लीजिए, ठीक है। ओके, सो थायराइड डिसऑर्डर यूज फॉर एनेस्थीसिया और टूथ एक्सट्रैक्शन। In China, they have tried in 1954 tonsillectomy without giving anesthesia, only by giving anesthesia on these bilaterally high frequency anesthesia दिया, without giving any anesthesia, they have removed the tonsil, tonsillectomy. Ectomy का मतलब क्या होता है? पार्ट को निकाल के बाहर करते हैं, ठीक है? Okay. This point can also cause abortion. So caution, if a pregnant lady you are treating, then you must avoid this point till she delivers. Okay. So it can induce abortion. Okay. So in 1954, they have done tonsillectomy by using only acupuncture anesthesia, and they have not used that. उसको क्या बोलते थे वो anesthesia को? Chemical anesthesia क्या बोलेंगे? या वो modern medicine का anesthesia नहीं दिया, only Li4 को high frequency से एक करके tonsillitis निकाल दिया गया। So high frequency. अपना जो मशीन है ना फ्रीक्वेंसी सिमुलेटर, उसको हाई फ्रीक्वेंसी में रखो, पूरा नम हो जाता, पूरा बॉडी पूरा नम हो जाता। ओके, हाँ हाँ, तो एनेस्थीसिया का और रिकवरी का क्या संबंध है? देखो हमारे क्लास में अभी एक डॉक्टर रेजिना है, वो बोल रही है एनेस्थीसिया नहीं देंगे तो रिकवर होगा क्या जल्दी? अरे एनेस्थीसिया का और रिकवरी का कोई ही नहीं है। जाएगा, अपना काम होने के बाद जाएगा वो। जैसे नॉर्मल अपन एनेस्थीसिया देते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया, हाँ, तो 5 से 6 घंटे में उसका टाइम ड्यूरेशन रहता है, मतलब पूरा रिकवर हो जाता है। इसको सर्जरी कंप्लीट होने तक ये चालू रहता है। स्टिमुलेशन चालू रहता है। हाँ, और एक बार सर्जरी कंप्लीट हो गई, टाके वाके मार दिए, उसके बाद वो स्टिमुलेशन बंद कर देते, तो अपने आप वो चला जाता थोड़ी देर के बाद। लेकिन जब तक हमको काम है तब तक हम उसको चालू रखते हैं, ठीक है ना? लेकिन इसमें क्या है, वो केमिकल थोड़ी जा रहा है। मेरे ऊपर एनेस्थीसिया काम ही नहीं करता, मेरे ऊपर काम ही नहीं करता, मालूम नहीं मेरे को क्यों, मेरे ऊपर एनेस्थीसिया काम नहीं करता। हाँ, मैंने एक बार गम सर्जरी कराया था, तो वहां पर उसने डाला, एनेस्थीसिया लगाया, उसका सर्जरी कराया। बाद में मेरे को तो उसके टाके समझ में आने लगे। बोला मैडम और डाली, वो मेरे को तो तकलीफ हो रही। बोले मैं पहले ओवर द लिमिट तुमको एनेस्थीसिया दे चुकी, मैं इसके आगे दे नहीं सकती। बोला ठीक है भाई करो। वो जब धागा ऐसा घुसता था और जब पूरी खींचती थी, और पूरा अगला पिछला सारे जन्म याद आते थे मेरे को, जो नहीं है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक्यूपंक्चर एनेस्थीसिया अगर मुझे दिया जाए तो वो काम करेगा अच्छे से। चलो ठीक है। सो एक्यूपंक्चर एनेस्थीसिया जो है वो जनरली यूज फॉर टूथ एक्सट्रैक्शन। अगर कोई अगर डेंटिस्ट है, अगर टूथ एक्सट्रैक्शन करता है विदाउट गिविंग एनेस्थीसिया, तो ये पॉइंट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है? टाइम इज 11:45. ओके, या so the function is to clear heat, expel the heat and wind cold, strengthen the lung chi, releases exterior
opens the senses, revives the mind, brightens the eyes, just like LI11. Uska ye hai. But there is one addition, one or two addition to it, that it also aids labor. You, because few moment back we said it also induces abortion. लेकिन अगर लेबर पेन में अगर लेडी है, if you are giving this point, then it will be ease for her to deliver the baby. अरे बात समझ, ठीक है? It also aid, लेकिन टाइम पूरा नहीं हुआ है उसका प्रेगनेंसी का, उस बीच में देने का नहीं. लेकिन अगर वो डिलीवरी रूम में अगर आपने रखा है उसको, और उस वक्त अगर ये वाला पॉइंट देंगे, तो इट विल एड लेबर, मतलब जो डिलीवरी का जो प्रोसेस है उसको हेल्प करेगा. इसीलिए थोड़ी देर पहले क्या बोला था, इट इंड्यूसेस अबॉर्शन. लेकिन अगर पूरा टाइम कंप्लीट हो गया प्रेगनेंसी का, और उस वक्त अगर आप दे रहे, तो वो भी एक तरह का अबॉर्शन ही ना, है ना? तो उसमें लेडी को आसानी जाएगी डिलीवरी करने में. देयर आर अदर पॉइंट्स एज वेल, एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, वो हम जब एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे तब समझेंगे इजी लेबर के लिए कौन से पॉइंट्स हैं. ओके, नाउ द qualification is Yonso's point of the body. Puncture 0.6 to 1 chun, 3 to 5 moxa cones, and 10 to 20 minutes moxibustion. 10 to 20 minutes moxibustion. Okay. Extra information. Her equals unite, to meet, and gu is valley. So the point name refers to its location. So this is valley, okay, and it meets. That's what the Chinese people say. It meets. I don't know where it meets. Okay, okay. Okay. So we'll stop here for today, and then tomorrow is our zero session, wherein we'll be studying things. वो एक तरह का ग्रुप मीटिंग है, क्या समझा, क्या नहीं समझा, क्यों नहीं समझा, ये सारी चीजें हम उसके ऊपर काम करेंगे कल. सब लोग अटेंड करिए. आज अर्चना नहीं है क्या लेवल? She is there online, but she is mute. आहे रवि. ओके ओके ओके, ठीक है, क्योंकि मैंने अपना विंडो को छोटा करके रखा हुआ है ना, तो इसलिए मेरे को सब. हाँ. सो कल तुम लोग देवल और अर्चना तुम लोग ऑनलाइन रहो, सुनो, और वैसे भी हम लोग सब चीजों को रिकॉर्ड करते हैं. कल का सेशन भी रिकॉर्ड करेंगे. कल तो सैटरडे है रवि. अरे हाँ, ओ मैं संडे सोच रहा था. कल सैटरडे, तो तुम लोग बाकायदा ऑनलाइन रहो, क्योंकि काफी सारा डिस्कशन हम मैं करना चाह रहा हूँ. जो लोग हैं यहाँ पर, और जो ऑनलाइन जो लोग हैं जिनको जो समझ में नहीं आ रही है चीजें, उसको अच्छे से और अच्छा स्ट्रॉन्ग करेंगे. ठीक है? ओके. चलो ठीक है फिर. ओके, आई विल से बाय फॉर टुडे. बाय Thank you, रवि. Ravi. Tomorrow 11 Bye. Have a good day. o'clock. Okay. Thank you. Bye everybody. Bye. बाय.